We'll take type of roofing, how we can create roof in Revit. Okay, so अगर रूफ सिस्टम अगर क्रिएट करना है रेविट में तो कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसका हम लोग एक टॉपिक लेंगे. ओके, so let us start in. Let's jump in and see what how we can change this, or how we can create these different type of roof in Revit actually. Okay. So I'm gonna take a new file, architectural template file. Okay. Go. And what we're gonna do is simply I'm gonna come into levels and we can give this level name. Maybe I can give this name as ground level, ground floor, whatever you want to name it. So we can call it as roof level. And then I can create another level. Name this level as rooftop. Come into the ground floor. Create some walls, some masonry wall, 140 mm. That. This, add some door into this. This can be my main door, entry door. Couple of window. Sure these walls are up to the level. Okay. If I look into the 3D view, we just see a normal walls with some doors. Normally wall head, door head, other items. Let us create the roof for this house. Okay, and you can create n number of type of roofing actually. So first I'll show you about this type of roof. Okay, all sides sloped here. You can see there's a slope at this side, other side, other side. Everywhere we have these slopings actually. So you can create that type of roof, basically the most common type of roof that you can create. Yes, these are all the different type of roofing actually. Okay, so this is called hip roof. Okay, so this type of roofing is called hip roofing. You can see this type actually. Say this one. I think this type of. Okay. Let's first create the hip roof actually. This file. So to create the hip roof, I'm going to come into the roof level actually. On that level, I'm going to create the hip roof. Okay. So
create the roof, we'll come into the architectural tab, take the roof command. Now in the roof command, we have three options: roof by footprint, roof by extrusion, and roof by face. Okay, so we have three options over here to create roof. One is by roof by footprint, the other one is roof by extrusion, and the third one is roof by face basically. Okay, so let me explain you what does this do. Generally, when you take the roof command, you get three options. Okay, so the option one is footprint. The option number two is the extrusion. And the third one is about biface. So you get three options in roofing: roof by footprint, roof by extrusion, and roof by face command basically. Okay. Now the point is when we should take footprint option, when we should take extrusion option, and when we should take the face option basically. Okay. So footprint means what? If you want to sketch the line of the roof basically, where you wanted to define the lining work, will take the footprint. Roof by extrusion is generally used when we want to create one side slope edge roof basically. Okay, maybe the shape of the roof is like curve, not curve also, but like an arc shape or little semicircle shape basically there. Then we take the extrusion command, and when the roof shape is very complex, very curved shape basically there, then we take the biface command basically. So supposingly if you wanted to create a roof that is going something like this, you can see this gambrel roof basically there. This is created using the extrusion command. Okay, because it has a very unique shape. It has a like an arc shape actually. Okay, or maybe if I want to create M shape roof. So if you want to create M shape roof, this can be also created using the wood roof by extrusion. Butterfly roofing is also created using by the extrusion command. You can even create the shed roof using the extrusion command as well. Okay, so these type of roofings are being created using the extrusions command basically. Okay, and if you take very complex roof shape like curve shapes are there supposingly. Okay, so something we have roof like that, okay, which is like curves actually, or something shape like that, unique shape basically there, or something like this. Okay, so if you want to create like wave type of shape or something like these shapes basically there, sorry, these kind of roofing, then we use biface command basically. So for creating complex shape roofing, we use biface command. It's not straight, but it's like having multiple curves. So if you have multiple curves, then we take biface command. But if you have a single curve, supposing you have this one single curve over here, then we can take use extrusion command over here. Okay. But if you have multiple curve like this, then it is biface command actually. Okay. Or if we have shape something like that, it is all biface command basically. Because the complexity is more basically. It has more geometrical shapes basically. The shape is not common actually. It has multiple curves. So for multiple curves,
we use biface command. Okay, and for like single curve, if there is a single curve, then we use by extrusion command. So you can see there's a single curve over here. Okay, and then there's another single curve. So we take extrusion command basically. Yeah, after you have question. For glass dome, once again, you can use the biface command. So if it's like a dome shape actually roof, again you can use biface command because it has curve is there, but it is 360-degree curve actually basically. So it's semicircle or we can say hemisphere. So hemisphere shape cannot be created using the extrusion command. So it can be only created using a biface command. Okay. So if you are looking for these kind of roof, the dome roof actually. Okay. So these dome roof are created using the biface command. It cannot be created using the extrusion command or the footprint command. Okay. So these are the three type of roofing option that you get when you take the roof option: footprint, extrusion, and biface basically. So I can give you a write down also. So if you take footprint, it is generally to create slope roof. And for extrusion roof, for curve roof actually, one side curve actually. So they have one side curve where you can use the extrusion command. And biface, if you have complex shape of roofing basically, multiple curves. Okay, so you can use footprints when you want to create slope roof, extrusion when you have one side curve roof, and biface when you wanted to create a complex shape of roof. Okay, or if you have multiple curve shape of roof. Okay, or dome roof basically that can be created using the biface command. Okay, now in order to use biface, we need to create massing objects basically. Okay, तो अगर बाईफेस रूफ अगर क्रिएट करना है, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मास शेप बनाना पड़ेगा बेसिकली. ठीक है, तो करंटली अभी हम लोग मास शेप नहीं कर रहे, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे तो फुटप्रिंट कमांड से हम लोग फोकस करेंगे. सो यू कैन ट्राई फर्स्ट विद द फुटप्रिंट. ओके, एंड ट्राई टू क्रिएट these kind of roofings. I'll show you the type of roof that we're going to try today. We're going to try the number 2 roof, hip roof, and we're going to try the cable roof 1, 2. We're going to also try the flat roof. Okay, number 5, so 1, 2, 5. And if we get a little more time,
we can explore with shed roof as well, number 6, and we'll try the Dutch roof as well, basically Dutch and the mansard roof as well, basically. Okay, so we're going to try 1 to 6 type of roof actually today. Let's hope we do five first, and then go ahead with the next 5 other type of roofing. Okay, so 10 types of roofing systems are roofing objects are there that you can create. The basic roofings are there. Okay, so we're gonna first try the hip roof. Okay, so let's do that. So hip roof is nothing. It has all side are slopes actually. There is a slope on every sides actually. So on the front side and the sides, even on the back actually. So all side are slopes. Okay, so let's try that option, the hip roof. So I have already created the walls. Okay, and I'm on the roof level. Okay, now I'm going to go into the architectural tab, and in the architectural tab we're going to take the roof command, roof by footprint. Okay, to draw it. Okay, you can see roof by footprint option is there. Okay, and when I take this option, it will take me to the draw mode. You can see it tells me, okay, you have to sketch the line. You need to draw the roofing lines basically. So I'm going to draw a rectangular shape. Okay, so I'm going to take the rectangle shape. And I can select the type of roof. I'm going to take generic 125 roof. I'm going to give a slight little offset. So I'm going to give like 150 offset. So my roofing will be slightly sticking out 150 and I'm going to draw a rectangular shape from this end to this end up till here. Okay. You can see all these sketch lines have been drawn. I'm going to hit on the finish editing mode. Complete this. Then if I go into the north view, you can see that roof is been there, and you can like select this roof, and you can see the roof top is not currently matching. So I can drag this arrow and take it till that line actually, that roof top line. Stick it till there. Got that roof. Now if we look into 3D view, you can see that roofing. Okay, it's that sloped all sides. You can see slope at this side, front side, in this side, and the back end side basically there. All sides are sloped. Okay, can you see that? So this is our hip roof. Now, if you feel that the height of the roof is too much, you can like bring it down. You can reduce it also, which will minimize the peak height of the roof. Come into the elevation view, and instead of giving 3000, I can make that up to 2000 It's slightly exceeding, so I'm gonna select these arrows and like put it up to the line. So we've got this is our sloped roof. Okay, got that type of roof ready. We have all sides are sloped.
Suppose I want to make, instead of hip roof, I want to make this as gable roof basically. Okay, so if you want to go with gable roof, so to go with gable roof, it is having only two side slope. So it's not having slope on the left and the right side basically. Only on the front and the back side the slope is there. So I can convert this roof only, this hip roof only into gable roof basically. So to do this roof from hip roof to gable roof, what I'm gonna do is I'm gonna select the roof and click on the edit footprint command. See, there is an edit footprint command on the top. Okay, so click on edit footprint, come back to the roof level, and you see whenever I select these lines with the line, you can see this triangle shapes objects are there. Okay, so this represent that this side of the line would having a slope, and the slope angle is also been given. You can see the angle of slope is 30 degrees. This side is 26 point something 60 degrees. Okay, this side should be also 30 degree of slope is there. So we want to remove the slope from the left side and from the right hand side. So I'm going to select that line, the sketch line. And when I select the sketch line on the top, you can see over here in the option bar, there is this something called as define slope is on. It is keeping this option on. So we're going to uncheck this. इसको uncheck कर देंगे. Okay, डाल दिया. ठीक, अभी यहाँ पे देखो स्लोप का मार्क चला गया. So there is no triangle mark next to this line actually. Okay, which means this side of the line will not have any slope. Similarly, we're going to change this for this side as well. Select the line, define slope of curve flow. Hit on the finish mode. Once you look into your 3D view, you see we have only two sides of the roof that is sloping. Okay, so from hip roof, now we got into gable roof. But there is one little problem with this type of roofing now. See about these walls, you can see hollow section over here. So those walls are not been touching till the roof level basically. So what I want to do is wanted to put up this wall to the top of this roof basically. तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है. क्या करो? Just select the wall, and when you select the wall, there is an option called as attach top base. You see over here on the top of the option bar, something called as attach top base command. Whenever you select the wall, I've selected the wall, I'll take the attach top base command, and I'll say attach the top of the wall to the base of the roof. So I'm going to select the roof now. The moment I did, you can see now that wall has been extended to the top of the roof actually. Similarly, on this other side as well, I can select this wall, attach the top to the base of the roof, and it's done. So my wall is now being attached to the roof basically. So now if I drag this roof, you can see the wall also get extended a little bit. Okay.
is your gable roof and hip roof. Two type of roofings are done. If supposingly I want to convert it into flat roof, to go ahead with the flat roof. I don't want any slopes on any side of the roof basically. Okay, so how do we do that? It is simple. Select the roof, click once again edit footprint, come back on the level, make sure you untick these slopes, define slope, untick it from all the lines basically. So सभी लाइन में से डिफाइन स्लोप जो था वो अनटिक कर दिया है. ओके, तो कोई भी लाइन पर अभी ट्राइंगल का मार्क नहीं है. Let me just click on the finish mode. Now if I come into 3D view, you'll see this roof is now converted into flat roof. Now you get your flat roof created. Okay, so from hip roof to gable roof and from gable roof to flat roof we have converted basically. Just define slopes ऑफ कर दो सभी साइड से, तो फ्लैट रूफ हो जाएगा बेसिकली. जो साइड से डिफाइंड रूफ ऑफ कर दोगे डिफाइंड स्लोप, तो वो साइड पे स्लोप नहीं होगा बेसिकली. अब शेड रूफ में भी कैसा है कि एक साइड पे सिर्फ स्लोप रहेगा, एक ही साइड यहाँ पे स्लोप है, बाकी कोई भी साइड पे स्लोप नहीं रहेगा. ओके, तो शेड रूफ बनाना भी सिंपल है. सिर्फ एक साइड का आपको स्लोप को ऑन रखना है. यहाँ पे फिर से रूफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट फुटप्रिंट कमांड लो, कम बैक ऑन योर रूफ लेवल, और जो साइड पे आपको स्लोप डिफाइन करना है, सपोज ये साइड पे स्लोप डिफाइन करना है, वो साइड का सिर्फ डिफाइन स्लोप ऑप्शन ऑन कर दो. ओके, बाकी जो साइड पे स्लोप डिफाइन नहीं करना है वो साइड को अनटिक रहने दो बेसिकली. तो वहाँ पे अनटिक थे, फिनिश करते. अब यहाँ पे 3D में देखोगे फिर से आपका शेड रूफ हो गया, बट अभी ये वॉल जो है वो अटेस्टेड नहीं है जैसे, तो ये वॉल को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इस रूफ के साथ. वॉल एक्सटेंडेड हो जाएगा. सेम ये वॉल को भी आप एक्सटेंडेड करके रख सकते हैं, अटैच दिस वॉल. अभी इसका स्लोप अगर ज़्यादा है, आपको कम करना है, तो आप ये एरो को लेके ड्रॉप को नीचे लेके आ सकते हैं. आपका शेड रूफ हो जाएगा रेडी. और नीचे लाना है तो इसको और नीचे ड्रॉप ले सकते हैं शेड. वेयर हाउस वगैरह में ज़्यादातर देखा रहेगा. ठीक, या तो फिर जो सिक्योरिटी रूम्स होते हैं या सिक्योरिटीज का जो छोटा सा कॉर्ड होता है बेसिकली, तो उसमें रूफ जो होता है शेड रूफ टाइप का होता है. शेड रूफिंग. We tried the gable roof किया, hip roof किया, फ्लैट रूफ किया और शेड रूफ किया है बेसिकली. डच रूफ क्रिएट कर लेते. डच रूफ में और मैnsard रूफ दोनों सिमिलर टाइप की है, बट डच रूफ में कैसा है कि डबल रूफिंग है एक्चुअली. ओके, तो एक रूफ नीचे बनाना है जिसमें दो साइड स्लोप रहेगा. ओके, और बीच में थोड़ा हॉलो टाइप रहेगा, और उसके ऊपर फिर बाद में अनदर टू वे स्लोप रूफ बनाना है बेसिकली. तो दैट इज कॉल्ड डच रूफिंग. डच रूफ थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. ओके, तो पहले हम लोग एडिट फुटप्रिंट ले लेता हूँ फिर से, एंड इंटीग्रेट रूफ पे जाते हैं. पहले हम लोग साइड्स के स्लोप्ड वाला रूफ बना लेते हैं. साइड स्लोप रूफ, इसे हम लोग डिफाइन स्लोप कर लेते हैं. इसे भी हम लोग डिफाइन स्लोप कर लेते हैं. इसे भी डिफाइन स्लोप ऑन कर लेते हैं. तो सभी साइड पे डिफाइन स्लोप टिक कर लेते हैं.
बट इसमें कैसा है कि बीच में एक कटआउट क्रिएट करना पड़ेगा। और एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ 350 mm का। स्पेस बार लेके अंदर हिट किया, मैंने बाहर जा रहा था तो। और ये स्टार्ट कहाँ से किया, दिस फ्रॉम इंटरनल वॉल से मैंने स्टार्ट किया। दिस इंटरनल वॉल टू दिस इंटरनल वॉल क्लियर। इसका भी हम डिफाइन स्लोप्स ऑन रखेंगे क्योंकि सबके डिफाइन स्लोप ऑन है लाइंस के। नोट को मैं अभी फिनिश करता हूँ। डिलीट हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा फुटप्रिंट 150 ऑफसेट ले लेते हैं। इंटरनल वॉल से इंटरनल वॉल तक का इनको फिनिश। जो लाइंस होगी उनका डिफाइन स्लोप ऑफ कर लेते हैं। इंटरनल लाइंस बनाई थी, सबका डिफाइन स्लोप ऑफ कर दो। एक्सटर्नल लाइंस का डिफाइन स्लोप ऑन रखो। फिनिश करते हैं। अभी आपका रूफ बन गया है, बट ये कट हुआ है कैसे, सिर्फ कट आउट रहता है इसका। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक और एक स्लोप रूफ बनाना है, बट दो साइड का। वन सेकेंड, हम लोग रूफ कमांड लेंगे और इसमें हम लोग 150 का ऑफसेट लेता हूँ मैं एक्सटर्नल वॉल लाइन से। एक्सटर्नल वॉल लाइन पर क्रिएट करेंगे और लेफ्ट साइड की जो लाइन है उसका डिफाइन स्लोप ऑफ करेंगे और राइट साइड की जो लाइन है उसका डिफाइन स्लोप ऑफ करेंगे। फ्रंट और बैक साइड में डिफाइन स्लोप रखेंगे और मोड को फिनिश करेंगे। में देखेंगे क्योंकि हमारे पास में एक प्रूफ रेटेड हुआ रहेगा। बाद में आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो ये लाइंस को इंडिकेटिंग करने के लिए। इसका स्लोप लाइन थोड़ा सा अंदर ले सकते हो, वो शो ऑफ ना करे। This type of roofing is called your Dutch basically. तो Dutch roofing में कैसा रहता है, इतना पार्ट जो रहेगा उतना हॉलो रहता है बेसिकली। वेंटिंग पर्पसेस के लिए वो लोग यूज करते हैं। सिमिलरली का मैंसार्ड रूफ भी सिमिलर है, बट इसमें खाली इसके ऊपर बनाया जाता है बेसिकली। ये कैसा है कि स्लोप जो है इसके ऊपर से ओवरलैप हो गया है, इसमें ओवरलैप नहीं होगा बेसिकली, इसके ऊपर ही टॉप पर ही बनाना है बेसिकली। तो अगर मैंसार्ड रूफ अगर बनाना है, let me just copy this whole thing actually. मैंसार्ड रूफिंग में क्या करना है, ये जो हमने बनाया है स्लोप प्रूफ जो बनाया है इसके ऊपर, इसको हम फिर से एडिट करेंगे और ये जो लाइन है इसको इस लाइन के ऊपर टच रखेंगे। लाइन टू लाइन टच रखना है आपको।
थोड़ा सा स्लोप दिया हुआ था इसको, ले लेता हूँ। सेम डिग्री ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिट फुटप्रिंट कमांड ले लो और जितना एंगल इसको है कितना 44 डिग्री, लेट्स मेक इट 45। सभी स्लोप का एंगल हम लोग सिमिलर दे देते, 45 डिग्री दे देते। स्केच लाइन भी प्रॉपर्ली ड्रॉ हो गई। 3D में देखोगे एक स्लाइट लिटिल प्रॉब्लम है कि ये जो रूफ है वो नीचे जा रहा है, तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिवेशन व्यू में आना पड़ेगा और इसे हम लोग को वाई फ्रेम मोड करके जो लाइन है इसके ऊपर स्टार्ट लाइन देना पड़ेगा, तो इसको मूव करेंगे हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। दिस इज योर मैnsard रूफिंग। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया मेरे से, हम लोग इसको और नीचे लेके आ सकते हैं। दिस इज योर मैnsard रूफिंग एंड ये आपका डच रूफ। दो टाइप ऑफ रूफिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड है, दोनों में हॉलो है बट टाइप्स डिफरेंट है। इसमें ये वाला जो टॉप रूफ है वो इस रूफ के साथ में मर्ज हो जाएगा बाद में, okay? और इसमें ओवरलैप होगा। ओके, गैबल रूफ, हिप रूफ, डच रूफ, मैnsard रूफ एंड फ्लैट रूफ एंड शेड रूफ, ये टाइप ऑफ रूफ हमने ट्राई आउट किया बेसिकली। अब रूफ में भी हम लोग को क्या करना है, इसमें डिटेलिंग बाद में ऐड करना है, जैसे कि रूफ की डिटेलिंग क्या होती है, इसमें पर्लिन्स और राफ्टर्स होते हैं। बीम्स एंड पर्लिन्स एंड राफ्टर्स क्रिएट करने रहते हैं, जिसपे हमारा रूफ जो है सपोर्टली स्टैंड हो सके, बेसिकली रह सके। तो इसके लिए हमें सिस्टम्स जनरेट करनी पड़ेगी वुडन्स के, तो बीम सिस्टम्स हम लोग जनरेट करेंगे। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल कमांड लेंगे तब हम लोग इसके रूफ का बीम्स जो होते हैं वो जनरेट करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ रूफ के शेप्स जनरेट करेंगे। ओके, मेन जो होगा उसका सिस्टम होता है बेसिकली। अभी रूफ का अगर आपको कोई मटेरियल अगर असाइन करना है तो भी आप असाइन कर सकते हो। सिलेक्ट द रूफ, एडिट टाइप में आ जाओ और यहाँ पे आप टाइप को डुप्लीकेट कर लो और फिर स्ट्रक्चर एडिट में आके यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आके उसको मटेरियल ले सकते हो रूफ का। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मटेरियल, दे देते हैं
Yeah, dash. Okay. यहाँ पे appearance library में जब आओगे रूफ का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे रूफिंग का बहुत सारे टाइप ऑफ रूफिंग मटेरियल्स है जो आप यूज कर सकते हैं। वुडन टाइप में भी है, टाइल टाइप में भी है, शीट्स में भी है, मेटल शीट्स में भी है। ओके, मैंगलोर टाइलिंग्स भी है, स्पेनिश टाइल्स भी है, जो भी टाइप आपको यूज करना है आप अप्लाई करो। अप्लाइड हो जाएगा। ब्लैक भी ले सकते हैं। अदर टाइप ऑफ रूफिंग भी ले सकते हो आप। Okay, so at least you can try these 6 type of roofing. Now you have this butterfly roof, gambrel roof, dormer roof and M-shaped roof. Okay, ये जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ है इसका मेथड थोड़ा सा अलग है बेसिक मेथड। ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। आई वांट फर्स्ट कि आप पहले इतने टाइप ऑफ रूफ को ट्राई करो, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली। once you know this 6 type of roofing system creation, then I'll go with the butterfly, gambrel, dormer and M shape। तो बटरफ्लाई, ग्रैम्ब्रल और एम शेप रूफ जो है वो एक्सट्रूजन कमांड से उसको क्रिएट करेगी। डॉर्मर रूफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग ये 3 टाइप ट्राई आउट करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉर्मर रूफ की डिटेल्स के ऊपर फिर से फोकस कर सकें। Okay, so try this out first and then we'll go ahead। Okay, इमेज मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप क्रिएट करो ऑल दिस 6 टाइप ऑफ रूफ। और का फाइल आप मुझे मेल करोगे या व्हाट्सएप कर लोगे, चेक कर सकते।
So please make the type of roof, the 6 type of roof, and send the files for corrections. That clear? I have also sent you the link for the YouTube channel as well of all the previous classes from start to end. Please go through that as well. Okay, so if you have missed any topic before, it is all covered in that channel. The curtain wall door, curtain wall window, uh, curtain wall detailings, every topics are being covered in that channel. How do we add levels, creating a wall details, all these things are being added basically. This is that specific channel. Yes, we'll go with family of door and window, which is also left out. Not the curtain wall door and window, but the basic door and window actually, like creating sliding window or creating bifolding doors or creating pivoting doors. So these topics are pending actually. So what topics we have completed? Let's check it in the list actually. So we have completed the session number 1, which was introduction to BIM and Revit file types and exploring the user interface. Session number 2 is also been completed, like adding levels, modify levels. Okay. Session 3, like we have completed creating walls and editing the wall details. Okay. So we did with wall sweep, reveal, adding wall details, wall layers, wall wrapping, wall opening. Okay. All these topics are being covered. Curtain walls, curtain wall detail, mullion profiles, curtain wall door, curtain wall window, stack wall, creating wall parts, assembly, create similar, create group. All these topics are being covered. Then we have also done with modify tools like align, offset, mirror, move, copy, rotate, trim, array, scale, pin, unpin, delete. Dimension tools are being done. Flooring topic is also being completed. Creating slabs, creating sun slab, creating finishing floors. Staircase is done. How do we add stairs, stair components, ramps? Then we are into the topic of ceiling. We did adding ceiling, modify ceiling. Okay. Now we are doing roof. After roofing, what element we're gonna do is about um, creating solid door and window. So this is the topic after roofing, creating solid door and window with parameters. Then what topic we have after that? We have is the topic of lighting. I think lighting we have also done solar study, creating lighting fixtures, adding lights, camera. These all topics are done. Then we have structural modeling. So in structural modeling, we're going to do structural columns and beams, beam system, braces, trusses, foundations. All these things we're going to come in structural modeling. Then we're going to do with site work. So like preparing contours, topo surface, sub-region, building pads,
site components. All these things will be done in site and massing and site. Then after massing and site, we're going to do the chapter of massing. How do we create mass element? How do we add mass wall, mass floor, mass roof? Okay, creating a system, massing system. Then we're going to have the chapter for rooms and schedulings, phasing. Then we're going to have detail elements. So these chapters are left off. Okay, so whatever topics are been done, I'll put it on the WhatsApp group as well. What topics we have completed. Okay, fine. Anybody has any questions? Any questions? Okay. Please download all the videos also. Okay, so that you can revise from chapter number 1 actually. I have uploaded all the videos on the YouTube channel now. It's all from day 1, day 2, day 3. All days are been uploaded. So you can go through session number, actually it is up till session number 4, up till curtain walls only. Okay. So Harik session ka I'll upload it on YouTube so that you can, whenever you want to revise it, you can go through that channel and revise it. Okay. So see you guys on Wednesday.